पे कोई सेशन हुआ? गौदुली? नहीं सर, लास्ट तो आप ही का था। एंड उसके पहले भी जो हुए थे वो वेबसाइट डेवलपमेंट या एआई वगैरह पे थे। वेब 3 पे तो देयर वर नॉट एज सच। Okay, okay, got it. Okay, people are joining, so we'll wait 5 more minutes, then we'll get a start. Everyone, Adesh this side. Kushal, can we start with the context setup? Kushal? Yes, yes. My voice is clear, right? Yeah. Hey, everyone. So I'll quickly set up why we are here. Plus, the primary purpose we are here is that we get the best outcome out of the IRL workshop that will be happening on Monday in your colleges. So, right. I'll set up the purpose behind this call is that everyone gets on the same page, right? Like we'll be going through the prerequisites required for the session for the IRL workshop, and he'll be covering what the workshop will be about so that you guys already have some idea before joining the workshop, right? So one thing I'll introduce Central DAO as well. So Central DAO is one of the biggest Web3 focused builder community out of India. We have over 25,000 plus core Web3 builders. Some of them are developers, some are founders, some designers, content creators, right? So our purpose with Central DAO is to help people. Basically, we have this analogy at Central DAO that we try to take people from 0 to 3. 0 to 1 is what we are doing right now, which is to create awareness around blockchain and take help you take that first step, right? Uh, where you start exploring this field in general, right? 1 to 2 is where we help with like diving deep into a technology through such online cohorts, offline cohorts we do regularly, collaborate with a lot of education based startups in Web3. And 2 to 3 is where we help you find a job, or if you want to be a founder, then help you with that sort of stuff. Right. So why we are exploring Web3 here? So, one thing that I personally believe, and you guys must also have observed this, right? You pick any person who is doing very good right now in the world, be it Zuckerberg, be it Elon Musk, be it Bezos, right? All they did, like all of them, they have one thing in common, which is they bet on a technology of future, right? Matlab Bezos was doing coding in 1990s.
right? वो तब से कोड कर रहा था, right? So what he did was he bet on the internet in general. उसने e-commerce निकाला, he started with books. मैक्सिमम लोगों को पता होगा, right? Elon Musk, his first startup was around जो यूएस में फोन बुक्स आती है, he put it online basically. So all of these people, they started to bet on future technology. And the same situation is right now. Web 2 has gone very conventional, मतलब वो same IT jobs है, तो अब वो वाला technology is sort of saturated, right? So what you can do best right now is to again bet on something futuristic, which can be AI, ML, which can be Web 3 blockchain, right? So I've personally seen a lot of people coming out of Central Law, मतलब जिन्हें 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, getting a very good job, like जो Web 2 में Meta level or Google level job out of Web 3. Plus, I would say even better sort of setups in Web3 jobs, in Web3 startups. Like you can easily work remotely. Like it's a very open culture. Remote काम बहुत ज़्यादा चलता है. You can work in a company based out of Delaware, based out of Cayman's Island, right? And the best thing is you will get paid almost equally. There's no pay gap. There are no geographical barriers in Web3. Why? Because it's a decentralized space, right? मतलब यहाँ geography matter नहीं करता. Everyone is standing at the same position all around the world. So that's the sort of a lure where you can think of this technology as a great opportunity, so that at least you can start exploring. अब आप जाके job करो, startup करो, whatever you want to do. All I want to say is at least give it a shot. Try to explore this new technology, right? Because there's a very good future out there, and still maximum लोग because of the conventional educational structure we have एक लाइन में चलते हैं, right? Which is to get a job, किसी को TCS, किसी को जो भी Infosys Wipro वगैरह में मिलता है, right? But there are very few people still in India जो कि थोड़ा रिस्क लेके अपने uh, like they get out of the line and try something new, और उन लोगों को they get rewarded in a very very good way. So that is why we are here, so that we start exploring Web3, right? We start exploring a career as a blockchain dev. Now I'll quickly cover about the company that we have collaborated with. It's called Core. So Core is also a blockchain, like other blockchain. You must have heard of Ethereum, Solana, right? Even if not of blockchain, you must have heard of Bitcoin at least, right? So Bitcoin is the oldest cryptocurrency, right? Cryptocurrency is basically, you can say, जो भी मनी होता है, राइट, द प्राइमरी फीचर ऑफ मनी इज कि मनी को आपको यू हैव टू राइट डाउन द ट्रांजेक्शन्स. अगर आपने मनी के ट्रांजेक्शन्स राइट डाउन नहीं करे, इवन डिजिटल करेंसी, सो मनी डजेंट वर्क, राइट? अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए और नो वन थ्रू यूपीआई और थ्रू एवरीथिंग, राइट, एंड नो वन राइट्स इट डाउन, then there is no proof कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, right? That's one thing, and that's the same case on top of the Bitcoin blockchain. ब्लॉकचेन इससे अपन को समझ आता है, ब्लॉकचेन एट द वेरी बेस इज नथिंग बट अ डेटाबेस जिसमें बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं. सो दैट्स बिटकॉइन, राइट? एक सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी आउट देयर जो कि इज ऑन टॉप ऑफ द बिटकॉइन ब्लॉकचेन. क्यों? बिकॉज ब्लॉकचेन नहीं है तो देयर इज नो मनी, बिकॉज ब्लॉकचेन इज अ डेटाबेस जहां ट्रांजैक्शंस लिखे जा रहे हैं. नाउ व्हाट कोर डिड हियर इज कि कोर ने यूजिंग मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, स्पेशली इथेरियम वाली, कोर ने बोला कि वो बिटकॉइन का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके केवल उसे करेंसी तक लिमिट नहीं करना चाहते. दे वांट टू ऐड द फीचर ऑफ पुटिंग इन कोड ऑन टॉप ऑफ बिटकॉइन. मतलब आप अपना कोड बिटकॉइन पे डाल सकते हो, विच इज आप और चीजें यू कैन डू ऑन टॉप ऑफ दिस ब्लॉकचेन अपार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, विच इज बेसिकली जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में वी हैव मनी, राइट? बट केवल मनी ही फाइनेंस नहीं होता. फाइनेंस में बैंक्स आते हैं, राइट? फाइनेंस में लोन्स इज अ मेजर पार्ट, फाइनेंस में एसेट्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ फाइनेंस. That's what Core did. Core ने Bitcoin का infra use किया और उस पे they put in this feature of putting deploying code on top of this blockchain ताकि you can build multiple applications, financial applications on top of this. So that's about Core. So it's a great blockchain out there. One of very few जो Bitcoin का use कर रही हैं, because Bitcoin is the most secure one out there. So that's about core. Now, Nick will take you through about the basics of what blockchain is in very short, and he'll be going through what core is, and then what we are going to cover in the IRL workshop. So I think it's clear to everyone. If you guys have any doubt, then let me know. Otherwise, Nick can jump.
Hey everyone. First of all, thank you very much here for joining this pre-session before IRL. So I just want to first of all thanks Adarsh for giving very brief info and very informative like knowledge about like basics of blockchain, what is core. So I just want to know like how many of you knows about like you guys are aware with this terms as blockchain. Like just raise hands so I'll get idea. One, two, three. Okay, okay, perfect. So okay, before proceed for the tech session or like very short go through of the documentation or the workflow, like how we can proceed in the like IRL workshop. So that is the like basic agenda to understand what is the workflow we have to understand, and what the important things we need to set up before the IRL. And it can be important for you as well, like because it's a completely learning session, so you will get a very good insights about how you can start your development journey if you haven't started yet. सो आई बिलीव यार कि अभी तक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का लाइक लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, सभी आपके जो भी यहाँ पे दोस्त लोग हैं हमारे, उन लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा. बट जैसे मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था लाइक इन सेज यूनिवर्सिटी फॉर बिल्ड विद एआई सेशन, I found like many of the people don't know about like don't aware with the GitHub. Like in this session, how much of you knows about GitHub? वन टू. प्लीज रेज हैंड्स गाइस, अगर पता है तो बता दो, मतलब रेज हैंड करो, हैंड रेज करो. ठीक है, ठीक है. लाइक दे आर लाइक 7 to 8 members who are aware with the GitHub. Okay, that's why we are here. Like many of you like don't know about the GitHub and haven't worked with that. Like all of the students comes from third year, or anyone is come from first year or second year as well. गौदरी सभी थर्ड ईयर के ही हैं क्या? नहीं सर, there are some from second year also. ओके ओके, थैंक यू. ओके गाइस, सो आदर्श ने ऑलरेडी आपको थोड़ा परफेक्ट परफेक्ट गाइस, ओके, नो इशू. सो दैट्स ग्रेट यार कि देखो तो आप लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में जो चीज अभी ये जो सेशंस होंगे ना, बेसिकली जो ये वर्कशॉप हम प्लान कर रहे हैं ना, इसका बहुत ही क्लियर विजन है. लाइक वी जस्ट वांट टू शेयर अवर नॉलेज एंड the insights about the emerging technologies, as we already done one session on AI. लाइक जितने भी लोग थे उस सेशन में, दे नोज कि मैं आया था एंड वी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल्ड मैनर, और बहुत ही बेसिक्स में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी. नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग कि यार आप लोगों को ब्लॉकचेन से भी इंटरेक्ट कराया जाए, और सिर्फ बेसिक्स या फिर सिर्फ लाइक वर्बल या फिर ऐसे बोल कर नहीं. वी वांट कि आप लोग थोड़ा हैंड्स ऑन लाइक अपने हैंड थोड़ा डर्टी करो विद द कोड, और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो कितना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बेसिक टूल्स को अंडरस्टैंड करो, बेसिकली कि क्या रिक्वायर्ड होता है इन डेवलपमेंट. So as I already mentioned, like GitHub is very important thing, very important tool in development cycle when you start your development journey. So ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल ओवरव्यू ले लेते हैं. तो प्री रिक्विजिट्स में जो भी टूल्स रहेंगे, मैं एक बार आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज दूंगा, उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोगों को शेयर होगा, लाइक लूमा के थ्रू जहाँ पे भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा जहाँ पे प्री रिक्विजिट सारी होंगी. आईआरएल का पूरा वर्कफ्लो होगा कि आप लोगों को वहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है. So if you guys are excited to start your journey, I'm not saying like you can start with directly with the Web3. If you are not started with any of the standard language, then just start with learn any of the standard language first. Standard language means Python, JavaScript or Java, जो कि मैंने last session में भी बताया था. But for now, we are going through with the Web3 Web3 technology as blockchain, and in the blockchain we are exploring core blockchain, which is built on top of Bitcoin. So let's get started. हम थोड़ा सा इसको go through करते हैं कि what things are required for this IRL session and what things you need to know before this workshop. So I'll share my screen.
यहाँ तक क्लियर है सभी को? जस्ट रेज हैंड्स, आपको माइक चालू करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेज हैंड्स कि हाँ आप लोग हो यहाँ पर। और ठीक है, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट है। हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहोगे तो इट कैन बी गुड। एंड आई एम प्रॉपरली ऑडिबल, राइट? Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, so my screen is visible to you? You have, my screen is visible? Okay, yes, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, so बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रिपेयर किया है जिसमें ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, जिसमें हम लोग एक बार ये गो थ्रू करेंगे कि हमें आईएल के पहले हमें क्या किन किन प्री रिक्विजिट्स की जरूरत रहेगी, या फिर हमें क्या सेटअप करना रहेगा बेसिकली, या क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बिफोर द वर्कशॉप विच इज रियल टाइम वर्कशॉप बेसिकली hosted in your college on Monday. So what to bring the to the workshop? So basically जिन लोगों के पास लैपटॉप है, प्लीज मेक श्योर कि आप अपना लैपटॉप लेके आओ विथ योर चार्जर, सो इट कैन बी गुड कि वहाँ पे कोई हडल ना है आपको। एंड थर्ड थिंग इज एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी। और मेन चीज यहाँ पर यार मैं ही बोलूंगा कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर द टेक्नोलॉजी, और दिस नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी टैक और web3 or blockchain. This is about you guys, like how you can start contributing for yourself. I always say is like कि जब भी मुझे कोई भी ऐसे टॉक्स में जाता हूँ मैं, तो मैं बहुत मेंशन करता हूँ ये चीज कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जस्ट टेक इट एंड ग्रेब इट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे इसी अपॉर्चुनिटीज को, इट कैन नॉट, ये आपको बार बार चांस नहीं देंगी। तो लेट्स गो विद सम प्री रिक्विजिट्स कि आपको क्या 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 आपको इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बिफोर वर्कशॉप। सो प्री वर्कशॉप सेटअप में आपको कुछ डेवलपर टूल किट लगेगी। कितने लोग यहाँ पे गिटहब से अवेयर हैं? अभी मैंने पूछ लिया था, लाइक सम ऑफ द पीपल आर अवेयर विद गिटहब। some of like how many of you knows about visual studio code, VS code? एक दो तीन चार पाँच। आप माइक चालू करके भी बोल सकते हो कि हाँ ठीक है। वैसे तो हैंड रेज हो गए हैं सारे यार, मेरे को सभी एक्टिव दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। परफेक्ट। नोट जे सभी के पास इंस्टॉल्ड है, या फिर कोई पहली बार सुन रहा है? रेज हैंड्स, जस्ट रेज हैंड्स, या फिर हाँ थम्स अप वगैरह चलेगा, तो मैं मुझे आइडिया हो जाएगा। मेजोरिटी अगर मुझे मिलेगी या 3 4 5 10 लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, आई विल गेट एन आइडिया। परफेक्ट। ओके, हार्डेट इज बेसिकली a blockchain tool. तो इसे हम वर्कशॉप में ही समझेंगे। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज हार्डेट एक्चुअली एंड हाउ यू कैन लेवरेज हार्डेट टू स्टार्ट योर डेवलपमेंट जर्नी इनटू द वेब3 और ब्लॉकचेन। तो बेसिकली आई गेस यार देखो, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी डेवलपमेंट में स्टार्ट कर रहे होंगे और जावास्क्रिप्ट वगैरह देख लिया होगा। बेसिक जावास्क्रिप्ट कितने लोगों को आता है? ये मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, लाइक हाउ मच ऑफ यू आर लाइक व्हाट इज योर करंट सिचुएशन इन डेवलपमेंट। लाइक जस्ट एक ये चैट बॉक्स में डाल दो एक बार, लाइक जेएस पाइथन कौन क्या कर रहा है अभी, ये चैट बॉक्स में डाल दो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा और मुझे आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, एक रिस्पॉन्स आया है, विनिक धारीवाल जी कर रहे हैं, जेएस भाई, रोशन भाई भी जेएस कर रहे हैं, बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। सर जी पाइथन बढ़िया, जेएस एंड जावा परफेक्ट। ठीक है, 5 रिस्पॉन्स आए हैं। Samyak Gupta, on my way to become a blockchain dev created that. I know buddy, like Samyak Gupta, I already in touch with him. He's really excited guys. वो बंदा बहुत ही excited रहता है, like on every time. इसने बहुत बार try भी करा connect करने का, but due to some like emergencies, I wasn't like in touch with him. But I'm really appreciate that guy like Samyak Gupta. He's doing very good job. So Python JS, Python C++, like ठीक है guys, thank you. It's really great to see like you guys are doing something in he's the web3. Someone could say something. He's the web3 lead here. Oh yeah, nice. I think I know, like he's doing really great in web3 and blockchain. He's very active. So let's jump into the documentation.
Okay, so this basic four things are required, and if you are working with any of the standard language, as you guys are mentioned, mentioned, like you are working around JS, JavaScript, Python, then you are aware with these things like Node.js, Visual Studio Code, and GitHub. That are the basic things we required. But now we are talking about blockchain. What you need is you need one thing is MetaMask. How many of you heard about MetaMask? Expect Samyak Gupta because he knows. कितने लोग हैं जिनको मेटामास्क पता है? चैट बॉक्स इज गुड. अच्छा था, सही है ये. चैट बॉक्स में डाल दो. मी, यस, यस. तीन 24 पीपल्स हैं यहाँ पे अभी. मी, यस. अगर नहीं भी पता है, नो वरी गाइज. Like why we are organizing this workshop and why we are here today for this pre-session. Okay, माशिरा मैम है, नो बोल रही, कोई बात नहीं, हम समझेंगे, अभी हम सीखेंगे, यही चीज सीखने के लिए आए हैं. थैंक यू गाइस, नो वरीज. जिन्हें नहीं पता है, इट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, टोटली विन विन सिचुएशन फॉर यू कि आप लोग आज कुछ नई चीज देखने वाले हो, कुछ नई चीज सीखने वाले हो बेसिक. कोई बात नहीं भाई, विल डेफिनेटली like go through with this basic prerequisites as MetaMask as well. Yes, मैं included है. तो guys, if you want to explore this MetaMask, मैं directly jump कर रहा हूँ MetaMask में. ये 4 चीजें तो हमने like these 4 things are like already everyone has an idea, like you guys already interacted with this. Hard hat का मैं कल बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसका. Like on the day of workshop, like we can check like how MetaMask looks like and what is it actually. तो बेसिकली मेटामास्क एक सॉफ्टवेयर वॉलेट है, जैसे आपका फोन पे वॉलेट होता है इन वेब 2. लाइक यू कैन कंसीडर लाइक देयर आर टू कंट्रीज आर देयर. लाइक वेब 2 इज जहाँ पे सारी स्टैंडर्ड चीजें चलती हैं, जैसे आप लोग जावा, पाइथन, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है बेसिकली, जहाँ पे कोई लाइक कोई भी इंटरेक्शन में सेंट्रल पार्टी होती है. इन वेब 3 देयर इज कंप्लीटली अ डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट, जहाँ पे कोई भी सेंट्रल पार्टी नहीं होती है. लाइक इफ आई एम सेंडिंग सम 100 रुपीज टू like any of the guy, like any of the member, like I'm sending 100 rupees to Kushal, then there is no third party between me. Like third parties I'm calling RBI or the bank. In web3 we directly transfer the assets or the digital currencies, which is already mentioned. Like आदर्श ने बताया था कि यहाँ डिजिटल करेंसीज का ही पूरा. सर, इज इट रिलेटेबल विद एनएफटी? हाँ भाई, मतलब बेसिकली एनएफटी इज काइंड ऑफ असेट. जैसा आपका आईएनआर एक करेंसी होता है ना, वैसे ही एनएफटी इज काइंड ऑफ असेट, और यू कैन कॉल एज अ यूनिक यूनिक डिजिटल आर्ट. आपका वो फिर म्यूजिक हो सकता है, या फिर वीडियो हो सकता है, या फिर इमेज हो सकता है. आप अगर पेंटिंग करते हैं, इट कैन बी पेंटिंग, और वो कोई सा भी आर्ट हो सकता है बेसिकली, योर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड एनीथिंग, राइट. सो बेसिकली एनएफटी भी उसका एक पार्ट है. एनएफटी, यू कैन स्टोर एनएफटी इन मेटामास्क. बेसिकली मेटामास्क इज बेसिकली सॉफ्टवेयर वॉलेट. I already have MetaMask in my system, but what I can do, I can मैं आपको शो करता हूँ कैसे आपको ऐड करना है into your browser. Basically what the important things you needed in this workshop. One like any of the browser, like वो Chrome भी हो सकता है, Firefox हो सकता है, Mozilla हो सकता है, VS Code, and basic like GitHub account. These three things are very important for you to like to understand. Like इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. Basically I'll explain कि कैसे आप MetaMask को ऐड कर सकते हो. Like I have already added in my browser, so I'll start with a fresh account, right? So you just need to like आप वो like you can also check with his link, or you can go through with this link as well. Like just click to MetaMask and it will redirect you to the MetaMask like official website, and you can also search MetaMask extension, right? It's very easy. You just need to remember the terminologies, so it can be good. It will be helpful for you. Okay, so you need to just click here. बेटा बेसिकली मेटामास्क एक सॉफ्टवेयर वॉलेट है, जो जैसे आप फोन पे में आपके कुछ वुडंट इट ब्लैक आउट फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑन स्क्रीन शेयर? नो, इट कैन नॉट. आई थिंक अभी आपको विजिबल होगा, राइट? सी, गेट मेटामास्क. इफ यू कैन सी हियर, लाइक इफ आई कैन शो, बहुत सारे टैब्स हो गए यहाँ पर. यू कैन सी
हाँ ठीक है, you can see I already have MetaMask in this. ठीक है, see we MetaMask on web because I already added in the extension section. यहाँ पे extensions रहते हैं हमारे सारे, MetaMask, Grammarly, Ad Blocker. See, same is it basically MetaMask is an extension और मोबाइल फोन के लिए एक बेसिकली एप्लीकेशन होता है. But currently we are working around the laptop because we are doing some code stuff, so we need to install in the Chrome as an extension. So I'll add it to the Chrome extension basically. See, अभी कोई यहाँ पे कोई भी एक एक्सटेंशन वाला ऑप्शन नहीं है. जैसे ही मेटामास्क ओपन होगा एक्सटेंशन वाला ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, राइट? See, MetaMask is added into my extension section in the Chrome. ये MetaMask क्रिएट हो गया मेरा. अब कितने लोगों को MetaMask सेटअप करते आता है? कितने लोगों को पता है MetaMask क्या है? मेधांश, विनिक, धारीवाल, सम्य केवल. Perfect. Guys, you just need to set up your MetaMask through the create a new wallet. Allow this, I agree. एक पासवर्ड रख लेना इसमें ताकि आप लोग बेसिकली रिमेम्बर रहे आप लोगों को. I'm creating new wallet. Secure my wallet recommended. Guys, इसको ऐसे समझो कि एक वन टाइम पासवर्ड है जो एक बार इसको जस्ट यू नीड टू कीप इन योर पेन एंड पेपर. लाइक आपको पेन पेपर से ही इसको लिखना है, पेपर में या फिर कहीं पे सिक्योरली रखना है. इफ यू आर कीपिंग इन योर सिस्टम और योर फोन, बिकॉज अगर ये एक बार जाएगा दैट मीन्स कि ऐसे समझो कि एक मेटामास्क में इस ये पर्टिकुलरली एक पासवर्ड है जिससे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट? सो अगर ये मिस होगा दैट मीन्स कि आपके सारे अकाउंट्स हैक हो जाएंगे. लाइक हैक नहीं बोलूंगा, लाइक जिसके पास भी ये रहेगा, ये पासवर्ड रहेगा, anyone can access your all the accounts because I'll show how we can create multiple accounts through this seed phrase or secret recovery phrase. I'll add into here. Okay, now ये कैसे काम करता है एक बार प्लीज मेक श्योर थोड़ा सा अटेंशन देना आप लोग. अगर लाइक थर्ड वन इज एक्सोटिक, अगर आपको इसको बताना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर कौन सा पासवर्ड है, बेसिकली कौन सा वर्ड है, देन इट कैन बी वेरीफाइड. The eighth one is 4 and 4. Detect. Great. अगर कुछ भी मिस्टेक होगी ना, फॉर एग्जांपल अगर स्पेस भी होगी तो ये मुझे कंफर्मेशन वाला ब्लैंक ही दिखाई देगा. बट मेक श्योर कि प्रॉपर हो, विदाउट स्पेस एंड एग्जैक्ट जो वहां पर लिखा हुआ है वैसे ही होना चाहिए, राइट? कंफर्म. Done. Congratulations, we are done with our setting up with our MetaMask wallet. It takes around 2 minutes or 3 minutes, I guess. तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हडल नहीं है आप लोगों के लिए. सी, वी आर हियर इनटू द मेटामास्क. यहाँ पे आपको सारे नेटवर्क्स दिखेंगे, बेसिकली ब्लॉकचेन दिखाई देंगी, लाइक इथेरियम, मैननेट, लीनिया, आर्बिट्रम 1. ये जस्ट टू एनेबल द टेस्टनेट हियर. अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट ठीक है, ये जस्ट रिमेंबर रखो कि यहाँ से आपके नेटवर्क्स आते हैं. ये आपका बेसिकली जैसा बैंक अकाउंट नंबर होता है वैसे ही आपका अकाउंट नंबर है. यू कैन सी अकाउंट 1, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ. एड अकाउंट और हार्डवेयर वॉलेट इथेरियम अकाउंट. You can see account 2, I can create account. मैंने 2 अकाउंट क्रिएट कर लिए. I can create hundreds or thousands of account through that secret recovery phrase. तो जैसे अकाउंट जैसे हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं. I have 4 accounts, like in one in ICICI Bank, second in HDFC Bank, and third in IndusInd Bank or SBI. तो ऐसा समझो कि secret recovery phrase is your RBI की. और जैसे सेंट्रल सिस्टम में आरबीआई से ही सारी फोर बैंक्स लाइक गवर्न है, सारी उसके अकॉर्डिंग ही रन होती हैं. ऐसे ही ये 4 अकाउंट्स जो है वो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज से ही रन होते हैं बेसिकली. और इनका भी एक सेपरेट पासवर्ड होता है. हाउ यू गेट दैट पासवर्ड? यू कैन क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स. आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है. यू सी लाइक अकाउंट डिटेल्स. ये बहुत बेसिक ओवरव्यू है, बट आप लोग अगर ये समझ लोगे ना
so it can be more like it can be really beneficial for you, too much beneficial for you and for your future. जब ये चीजें बहुत नेचुरल हो रही होगी ना, जब लाइक सब लोग इसको समझ रहे होंगे कि वेब3 क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये टेक्नोलॉजीज लाइक ग्राउंड लेवल पे लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, नेचुरली लोग समझ रहे होंगे। अभी आप आपके पास एक बार एक्सप्लेन लाइक एक बार ट्राई करना, आसपास किसी से पूछना कि व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड व्हाट इज मेटामास्क, नो वन नोज अबाउट दिस थिंग एंड वी आर लर्निंग दिस थिंग। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इतना लाइक क्यों इतना एक्साइटेड है तुम्हें शेयर करने के लिए या फिर इन चीजों को बताने के लिए, जस्ट बिकॉज वी वांट टू ऑनबोर्ड लाइक मोर एंड मोर पीपल, more and more students to know about the emerging technologies and try to onboard themselves onto the technology। जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट, बट दिस इज द बेसिक स्टेप, लाइक ये सबको आना चाहिए, क्योंकि मेटामास्क सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं है। अगर आपको फ्यूचर में अगर डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपको एंटर करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क, how your digital account work basically, or your ownership account, because यहाँ पे कोई भी सेंट्रल पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई पास, मैंने कोई पैन कार्ड नहीं दिया, कोई आधार कार्ड नहीं दिया, you need to just keep your secret phrase with you and play around your wallet। अब यहाँ पे यूएसडी दिखाई दे रहा है आपको, पोर्टफोलियो बेसिकली यहाँ पे देखो, इथेरियम टोकन है, इथेरियम है, लाइक देयर आर मेनी मेनी काइंड ऑफ करेंसीज आर देयर, यू कैन होल्ड, जैसे आप स्टॉक्स में अपने होल्ड करते हो करेंसीज को, सेम एज इट इज ये भी है एक रियल वर्ल्ड में। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइक अकाउंट डिटेल्स, शो प्राइवेट की, इट्स ये आपको कल काम में आने वाली है। जो अभी 20 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए जब भी हम वर्कशॉप में होंगे, क्योंकि वहां पे बेसिकली डॉट env करके एक एनवायरमेंट फाइल होती है, जो भी डेवलपमेंट में है वो सब वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं जस्ट राइट डाउन द डॉट env वर्ड और टर्म in your like in your any of the notebook or the paper, so आप लोग बाद में सर्च करके देख पाओ कि ये क्या होता है एंड डेवलपमेंट में इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो बेसिकली बेसिकली जब भी कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है तो प्राइवेट की इज द मेजर पार्ट इन दैट। आई विल चेक कि कैसे हम ओपन करते हैं इसको, एन की जी, एक आपका करेक्ट पासवर्ड आपको डालना है। रिमेंबर योर पासवर्ड एंड सीक्रेट रिकवरी फ्रेज इज वन टाइम, लाइक एक बार भी अगर लूज होता है, अगर आप कहीं मिस करते हो, ये रिकवरेबल नहीं है, अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं होता है। तो जस्ट मेक श्योर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड वाला कोई ऑप्शन नहीं है। सो मेक श्योर कि ये कभी भी आप लोग मिस ना करो, कभी भी आप लोग भूलो ना। एंड मेक श्योर कि सीक्रेट रिकवरी फ्रेज जो है शेयरेबल भी नहीं है। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। सी होल्ड टू रिवील प्राइवेट की, मुझे यहाँ पे होल्ड करना है, ये कभी दिखाना नहीं है, क्योंकि ये मैं टेस्टनेट एनवायरनमेंट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये टेस्टनेट का पूरा एनवायरनमेंट है, जहाँ पे इनको मैं कभी भी कोई रियल टाइम मनी या रियल मनी के लिए यूज नहीं करने वाला हूँ बेसिकली। सो जस्ट रिमेंबर दिस इज योर प्राइवेट की, यू जस्ट नीड टू कॉपी एंड लाइक पेस्ट इन योर वेरिएबल्स। यस, समवन रेज हैंड्स, कोई क्वेश्चन है क्या? Okay, so make sure that is the basic flow to how to set up MetaMask, how to use MetaMask. Now I'll show you how you can add networks. Like currently we are collaborated with Core Blockchain. हम जो भी development करेंगे वो Core Blockchain पे करेंगे. So how we can add that network? Core Blockchain Explorer. We already added some links. हमने यहाँ पे links add कर दिया है. For example, see, this is not okay. Yes, you can see, आप लोग जब यहाँ पे क्लिक करोगे, ये it will redirect you to the explorer, directly onto the explorer, right? So what we have to do is, it's in faucet, sorry, it's faucet. Okay, okay, core testnet to explorer. I'll update this link. ठीक है guys,
basically this is your network. Okay, so where we ठीक है. Okay, we are here. Like we are already at it metamask, like you can see here. आप लोग इसको expand view भी कर सकते हो. There is a option. यहाँ पे आपको जाना है. Like it cannot ऐसे नहीं दिखाई देगा ये हर बार. So you need to start metamask from here. ऐसे pop-up आता है हर बार. You need to click into this three dots or expand view, so it can reflect here into the new tab. Right. So what we are doing is like we are trying to add the code blockchain network in the metamask, so we can perform or like we can enable all the activities, and like we can perform to transaction, like send some money to the another account, or like how to get testnet tokens, because there are two types of environment. Like one is testnet token, you can see core testnet 2 scan, and another one is like mainnet blockchain. There are two networks. एक होता है टेस्टनेट जो डेवलपर्स के लिए होता है, एक होता है mainnet जिसमें रियल टाइम में जो भी मनी लाइक रियल मनी के साथ में ट्रेड होता है या फिर ट्रांजेक्शंस होते हैं या फिर डेवलपमेंट्स होते हैं, राइट. So we are because we are trying to explore the ecosystem, and we are trying to onboard ourselves into the blockchain. Then we can go with the testnet. So basically, we need some test tokens as well to play around it, because blockchain और Web3 में blockchain और Web3 में जो होता है basically for the every action you need to perform transaction. For the every activity you need to do a transaction. आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन करना होता है for doing anything. अगर आप कुछ भी कर रहे हो आपको एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा. लाइक ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर इस तरीके से कुछ दिखाई देता है. आप कोई सा भी ब्लॉकचेन देखोगे, लाइक ये कोड ब्लॉकचेन है. आई कैन शो द इथेरियम ब्लॉकचेन एज वेल. लाइक इट कैन गिव यू आइडिया अगर आप लोगों ने, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर ब्लॉकचेन है, तो आप लोगों ने अगर सुना हो, यू कैन सी लाइक सेम इथेरियम इज लुक्स लाइक सेम इज कोर सिमिलर दिख रहा है सब कुछ, राइट. सो बेसिकली ब्लॉकचेन के जो भी एनालिटिक्स होते हैं वो इस एक्सप्लोरर पे दिखाई देते हैं. Anyone can come here and see the transactions, because blockchain is a completely a public ledger. जो भी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो, anyone can track transactions, see transactions, but all the transactions are encrypted. You can see, आप देख पा रहे हो ना, like this transaction is done by this address, like this guy from. That means you can consider this as me, and you can consider this address to Kushal or any of the guy like Satyam. So you that is the basic flow कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप लोग कैसे ट्रांसफर करते हो, या फिर ऐसी एक्टिविटी सारी ब्लॉकचेन में होती हैं. और दैट इज द बेसिक फ्लो कि सारे एक्सचेंज जो भी होते हैं ट्रांजेक्शन के फॉर्म में होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड core account into our metamask. Here you need to add core testnet. Approve. You need to approve this request and done. See, code blockchain testnet is added to our metamask wallet. और बेसिकली हमने ये नेटवर्क को ऐड कर लिया है हमारे अकाउंट में, सॉफ्टवेयर वॉलेट में, राइट. सो व्हाट वी कैन डू नाउ, अपन एक बार एक्सप्लोरर से अब बेसिकली फॉसेट ट्राई करके देखते हैं. फॉसेट का मतलब बेसिकली टेस्टनेट टोकन होता है कि यू कैन कॉल दिस, इट लुक्स लाइक दिस. और सारे प्रोटोकॉल्स में, सारे ब्लॉकचेन में यही फ्लो रहेगा, यही वर्क फ्लो रहेगा. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग अगर एक बार देख लोगे, एक बार समझ लोगे, यू विल गेट वेरी गुड आइडिया कि आप लोगों को कैसे फ्रॉम द स्टेप वन आप लोग स्क्रैच से कैसे अपने आप को वेब3 वर्ल्ड में इन्वॉल्व कर सकते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट राइट नाउ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स. विल कवर द बेसिक्स ऑफ गिटहब एंड लाइक जो भी हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा IRL के लिए. आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सम ऑफ द मिनट्स. Sorry guys, we need to copy our account address, which is looks like this. Like ये account address है आपका. Basically it is called as a public key in blockchain terms. I'm not a robot. Get t code. देखो मैंने अपना एड्रेस डाला. अब इन्होंने क्या करा कि मुझे कुछ टोकन सेंड कर दिए into the my account. किन्होंने कोर टीम ने basically they have set up like a system to provide some tokens so developers can test like do something on their network or on top of code blockchain.
So you can see I get 1 to T core from this faucet. You can see the transaction. जब मैं transaction पे जाऊंगा, it redirects me to the explorer on the core testnet environment. You can see the transaction from this account. Like this account holds all the core testnet tokens, and it transferred to this address, which is my address, राइट. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन एथ. ये भी एक और भी दे देता हूँ. एंड जैसे हमारे कैसे एनालिटिक्स होते हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम में कि बैंक अकाउंट होता है, या फिर यार मैंने तो बहुत टाइम से ये यूज ही नहीं किया है, तो मतलब कैसे बताऊं. जो भी उसमें वेरिएबल्स होते हैं, तो बेसिकली एक की होती है, एक बैंक का नंबर होता है, बेसिकली जो भी नीचे होता है एक SBIN करके जो भी होता है, इस तरीके से सारे पॉइंटर्स होते हैं. फ्रॉम टू किसने किसको भेजा, बेसिकली टाइम क्या था. तो ये basically same things are here in the Web3 kind of thing as blockchain explorer, Web3 term basically. स्टेटस ये सक्सेस हो चुका है, ब्लॉक है, ठीक है, राइट. तो बेसिक स्टफ है, ये आप लोग एक्सप्लोर कर लेना. सो वी आर डन विद द मेटामास्क सेटअप. अकाउंट एडेड इनटू द मेटामास्क. और हमने यहाँ पे ये अंडरस्टैंड किया कि हम लोग कैसे कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं मेटामास्क में, बेसिकली सॉफ्टवेयर वॉलेट में. सो दैट्स दैट्स इट फॉर मेटामास्क और वेब3 पार्ट, की जो हमारे लिए प्री रिक्विजिट्स था कि वेब3 में हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगा बेसिकली, राइट. और मैं यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ हाउ यू कैन ट्रांसफर द मनी. सेंड लाइक अकाउंट 1 आई वांट टू सेंड ऑन अकाउंट 2. आई वांट टू सेंड दिस 0.5 टोकन्स, 0.5 को टोकन्स टू द अकाउंट 2, जैसे हम लोग बैंक में करते हैं वैसे ही इसमें भी होता है. कंफर्म. सी like transaction is pending. You can like इसको एक बही खाता समझो, like kind of ledger, not kind, it is ledger which maintains the record of transactions, right. And others ने बता दिया था, basically blockchain is a, in simple terms, blockchain is basically a database which contains some basically block and data, like block and chain. Basically blocks are basically a block which contains some data in form of transactions, राइट. तो ब्लॉक एक बॉक्स है जिसमें कुछ डेटा होता है. डेटा बेसिकली फॉर्म, ये ट्रांजेक्शन जो हमने परफॉर्म किया है यही ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली. इफ आई कैन सेंड लाइक V1 ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, जो ट्रांजेक्शन मैंने भी किया है, यू कैन सी एज वेल. सी I send it like value 0.5 core, you can see here. I send it 0.5 T core to the another account, my account number sec2, like my account number 2 is 0x59. All things are encrypted. That's why it's very much secure, decentralized, immutable, and completely public ledger and not hackable, tamper proof. There are many terms which defines like blockchain is very strong technology, and we need to understand how we can leverage it in our development or in our career. So that's it from the ब्लॉकचेन प्रीरिक्विजिट साइट्स की. हमको सिर्फ एक मेटामास्क वॉलेट लगेगा, कोर ब्लॉकचेन का टेस्टनेट का एनवायरनमेंट लाइक एक्सप्लोरर रहेगा, हमें जिसे गो थ्रू करना रहेगा, एक बार अंडरस्टैंड करना रहेगा हमने कहाँ से नेटवर्क को ऐड किया. और क्लेम द टेस्ट टोकन फ्रॉम द कोर फॉसेट. वी ऑलरेडी लाइक चेक कैसे होगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. द नेक्स्ट थिंग, वर्कशॉप सेटअप गाइड. हमने ये प्री रिक्विजिट देखे अभी जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे. बिफोर वर्कशॉप यू नीड टू सेटअप एवरीथिंग. जो लोगों के पास लैपटॉप है, यू गाइस कैन ट्राई इट आउट. डेफिनेटली आप लोगों को चेकआउट करना चाहिए. सो आप लोगों के लिए इजी होगा इनटू द वर्कशॉप. आप लोगों के लिए काम थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा वाइब चेक कर सकते हो. लाइक यू कैन कम विथ योर ईयरफोन्स एज वेल टू थोड़ा सा वाइब कोडिंग टाइप का एनवायरनमेंट भी हो जाएगा बेसिकली, राइट. सो that is the basic overview of MetaMask and Web3 wallet, kind of Web3 wallet, or we can call software wallet. The next thing is GitHub, right? Git. So जैसे इनिशियली क्वेश्चन पूछ लिया था कि यार बहुत सारे लोग हैं जो गिट जानते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो नहीं जानते हैं. So what you need to do is like you need to start with these basic commands. Open your terminal and run git init, git remote and origin. अब इसमें एक फ्लो रहेगा बेसिकली. as we all know, like बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डिसेंट्रलाइज या फिर डीएप्स के बारे में नहीं पता है, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में नहीं पता है. सो बेसिकली ब्लॉकचेन में जैसे हम लाइक इन वेब2 हम लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन. सो जो हम पाइथन में जब कोड करते हैं तो उस कोड को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, राइट. सो ऐसे ही ब्लॉकचेन में
सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है। अभी सॉलिडिटी को कीप इन माइंड कि ये एक इथेरियम कॉम्पिटेबल ब्लॉकचेन है, ईवीएम कॉम्पिटेबल ब्लॉकचेन है। जैसे वर्चुअल मशीन होता है जावा में, वैसे ही इथेरियम में या फिर ब्लॉकचेन में ईवीएम होता है, विच इज कॉल्ड इथेरियम वर्चुअल मशीन। And core blockchain leverages that technology, Ethereum virtual machine, and supports Solidity language for smart contract development. तो जैसे हम पाइथन में कोड को स्क्रिप्ट बोलते हैं, वैसे ही हम ब्लॉकचेन या फिर वेब3 में सॉलिडिटी लैंग्वेज में जो कोड होता है, बेसिकली जो कोड हम लिखते हैं, उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? सॉलिडिटी मैंने बता दिया, इट इज अ लैंग्वेज विच इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ इथेरियम एंड इट यूजेस द इथेरियम वर्चुअल मशीन। द ऑपकोड, ऑपकोड मतलब एक मशीन लेवल की टर्म होती है जिसमें प्री डिफाइंड कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो मशीन लेवल पे अच्छे से जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम से या फिर ये सब पढ़ा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो बेसिकली मैंने बता दिया था कि यार सॉलिडिटी इज बेसिकली a language and smart contract is built on top of like using the solidity we can write smart contracts. Smart contract basically वर्ड से समझ में आ रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक स्मार्ट, समथिंग स्मार्ट, राइट? सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली a piece of code जो कि ऑटोमेटिकली लाइक जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कोड के थ्रू लिखते हो, लाइक जब आप कोई जावा स्क्रिप्ट में कोई फंक्शंस डिफाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड सम सेट ऑफ रूल्स। आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा या फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। सेम इज इट इज इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वी कैन डिफाइन सम ऑफ सेट ऑफ रूल्स और उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूशन करता है। बेसिकली देयर इज नो नीड टू इन्वॉल्व एनी ऑफ द थर्ड पार्टी इन दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रियल एग्जांपल लेता हूँ कि जब हम कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, there are three parties, like one is sender, like second one is a buyer, and third one is registrar, right? But हमें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, like we need to the mutual understanding and we need to gather like three people. But in the blockchain and web3 ऐसा नहीं होता है। Through metamask, like through smart contract, everything is automated. You just need to trust onto the code, or like you need to give some set of instructions through the smart contract, and it can execute automatically basically. For example, अगर जैसे बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई एफडी वाला कॉन्सेप्ट है तो आप लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स उसमें सेटअप हैं कि यार 100 रुपए अपने इन्वेस्ट 1000 रुपए इन्वेस्ट करे फॉर 1 मंथ, तो हम आपको 8% के अकॉर्डिंग आपको हम उसका रिटर्न देंगे, एनुअलाइज रिटर्न, कि 8% जो है एनुअली कैलकुलेट होगा। Same kind of things we can write in smart contract as well. We can create calculator from smart contract. We can create a storage manager, like जहाँ पे हम एक काउंटर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। तो बेसिकली it works as like it generates some it executed some automated work. Basically, it reduces the middleman like that particular step, or we can call कि एक मिडिल मैन का काम करता है जो कि आपके लिए सारा काम करके देता है, लाइक ऑटोमेटिकली सारा आपका काम एग्जीक्यूट करके देता है। सो यू कैन कंसिडर इन दैट वे। एंड सो अब बहुत सारे लोग जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अवेयर नहीं होंगे, सॉलिडिटी से अवेयर नहीं होंगे। दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन, लाइक वी क्रिएटेड सम प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स फॉर यू गाइस। हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना लिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। आप लोग सिर्फ व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू सेट अप योर गिटहब, और जो लोकल प्रोजेक्ट वी कैन शेयर यू थ्रू द लाइक गूगल ड्राइव, जहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे हम लोग। सभी को डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन हो जाएंगे, एंड थ्रू दैट गूगल ड्राइव यू नीड टू फाइंड योर प्रोजेक्ट एंड इंस्टॉल इन योर लोकल सिस्टम और सेटअप इन योर लोकल सिस्टम बेसिकली। और आफ्टर डाउनलोड और set up in your local system in the VS Code, what you need to do is like you need to run git init, git remote add origin। बेसिकली हम कैसे लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करते हैं। So before that, like before initiating these things, you need to create a repository, unique repository according to your project. For example, मैं यहाँ पे explain कर देता हूँ एक बार, right? So मैं यहाँ पे GitHub पे जाता हूँ। We can start with this as well. So आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, जिन्हें नहीं पता है वो लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएंगे। Okay, I'm going through with, हम लोग प्रोजेक्ट देख लेते हैं, हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम लोग ये नहीं बना रहे। फॉर एग्जाम्पल ओके, सी
हम लोग एक बाय मी कॉफी करके एक कॉन्ट्रैक्ट बन लाइक वी हैव ऑलरेडी रिटन ऑल द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स, वी जस्ट नीड टू गो थ्रू। एंड हम आईआरएल सेशन में भी यही करेंगे कि आप लोगों को जस्ट प्रोजेक्ट को गो थ्रू करना है एंड यू नीड टू जस्ट वर्क अराउंड द डिप्लॉयमेंट, यू नीड टू डिप्लॉय योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन, दैट्स इट। बट ये एक स्टेप आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। सीडी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सीडीजी कोर सीडी एलएस सीडी कोर वर्कशॉप टेम्पलेट सीडी बाय मी कॉपी कोड डॉट। सो गाइस, मैंने अभी अपने प्रोजेक्ट में मैं अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में अभी लाइक आई स्विच्ड ऑन माय प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, यू कैन सी। बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसमें बेसिकली जब भी आप कोई आपका कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप लास्ट में बाय मी कॉफी डाल देते हो, लाइक इफ दिस कंटेंट इज यूजफुल फॉर यू और लाइक बेनिफिशियल फॉर यू, जस्ट बाय मी कॉफी। लाइक आप लोग कुछ रुपीज सेंड कर सकते हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, so they can buy coffee and cheer with like for giving insights to you, like जो भी contribute आपके लिए उन्होंने किया है, you can contribute for them as well। So right, so we are here today and right, so इस documentation में आपको already okay, what we do is like we are already done with the project setup into my local same ऐसा ही आपके इसमें भी होगा कि एक फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोग डाउनलोड करोगे, बेसिकली आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड करोगे, यू नीड टू जस्ट स्विच टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी। वो बाय मी कॉफी भी हो सकता है, वो कोई और डैप भी हो सकता है, कोई और प्रोजेक्ट भी हो सकता है। यू नीड टू जस्ट लाइक स्विच टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी, ऑल द कंप्लीट प्रोजेक्ट यू विल फाइंड देयर, आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट वहां पर मिल जाएगा। ये इसलिए किया है कि guys you guys are not aware with these things, I know, like you guys are beginner, that's why we have created, so you will get an idea and you get excited to build your first project or first smart contract through this guide, so it can be beneficial for you। uh, okay, we are done with this thing, we are here। okay, so we can create repository with buy me a coffee, correct? ठीक है, because we are from Sage University, so we can add Sage buy me a coffee description। हाँ, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे हम, ये पब्लिक रहेगा बेसिकली आपका रिपोजिटरी। आपको जब भी कल आप जब इसमें काम कर रहे होंगे, यू हैव टू मेक श्योर आपको रीड मी ऐड नहीं करना है। हम उस फोल्डर स्ट्रक्चर में रीड मी भी शेयर करेंगे जो ऑलरेडी कंप्लीटेड होगी। यू नीड टू जस्ट रिप्लेस योर रिपोजिटरी यूआरएल और योर यूजर नेम, दैट्स इट। क्रिएट रिपोजिटरी, you can see okay, I'm done with this repository, मैंने क्रिएट कर लिया है इसको। see, so क्योंकि like और push on an existing repository from the command line, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लोकल मशीन पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी इंपोर्टेड है, लाइक मैंने सारा सेटअप कर रखा है। आई जस्ट नीड टू कनेक्ट माय local directory to the remote repository, so I can add git remote add origin, the same thing I added into the Chrome as well। you can see in the documentation you need to initialize git init git remote add origin। अगर ये नहीं होता है, we can try it out here। okay, so what we have to do, like you need to run git init first, right? see, initialized empty git repository, now we can able to git remote add, see git remote add origin। ये जो repository मैंने यहाँ पे भी जो repository क्रिएट की थी, I copy this from here
and run this command. Now you can see I have some. You can see I have to commit some new code and new files. What for? Before that, I need to check git branch hyphen m main, because our main our like key branch is our main branch is our import, like what we are using for pushing the code or uploading the code onto the remote repository. Git push your origin main, then you can go for this. But before this reference pack main does not match any reference. But before this we need to pull the code from repository as well. Git status, क्योंकि मैंने कुछ commit नहीं किया है, you can see no commits yet. मेरे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन है, मैंने इसको गिट रिमोट रिपोजिटरी से मेरे लोकल सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मैंने इसको अभी स्टेटस भी चेक किया है, लाइक दिस कोड इज ready to upload onto the remote repository, or I can say like we need to just commit code and push code onto the remote repository. Before that what we can try, हमको यहाँ पे ये चेक करना रहेगा कि so before pushing the code we need to verify everything कि हमारा contract सही है, हमने contract सही लिखा है. It is or like it can be deployable on core blockchain. For that we need to run npx hardit for the local dependencies. For it is a tool, npm is a tool, everyone aware with that. Like बहुत ही basic चीज है. I am expecting कि आप सभी aware होंगे इससे. npm install, which downloads some of pre-built modules, which is called node modules, according to this project, right? देखो यहाँ पे ये डन हो गया है, क्लियर. ये वाला प्रोसेस भी यहाँ पे है, so you need to check it out, like npm install, npx hardit compile, npx hardit run script deploy.js network. ये सारे कमांड्स रहेंगे, पूरा डिफाइंड रहेगा बहुत ही प्रॉपर मैनर में. बट और हम IRL में भी एक प्रोजेक्टर पे पूरा रन करके चलाएंगे ताकि आप लोग सेम पेज पे रहो, बेसिकली हम लोग मिस ना हो कहीं पे, और everyone can on the same page. So now what we can do, like we can run the smart contract, like we can check or compile the smart contract कि हमारा smart contract है जो सही है. npx hardit compile, perfect, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल करेक्ट है. नाउ वी नीड टू रन दिस कमांड, द फाइनल कमांड फॉर अवर प्रोजेक्ट, और इसको मैं यहाँ पे भी चला सकता हूँ. Now we are trying to deploy this smart contract. Basically there is a contract buy me a coffee, right? और here is a script. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी in the IRL, so make sure कि आप लोग इनसे अंडरस्टैंड रहे. Before, जिसके पास लैपटॉप है, just try it out. npx hardit run script deploy.js, you need to run this command. सभी के लिए सेम कमांड रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा. हम लोगों ने इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर रेडी किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कुछ भी. deploying contracts with the account, this is my public account. अगर आपको पता हो ब्लॉक लाइक metamask का अकाउंट जो था वो ही है. और in the IRL you need to add two env variables. First is private key, second is testnet scan key. ये लोग हम आप ये वाला वेरिएबल हम दे देंगे, और प्राइवेट की मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं, कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हो इन मेटामास्क. ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोगों को ये फ्लो पता रहे मेटामास्क में कैसे प्राइवेट की आप लोग फाइंड कर सकते हो. और उसी को आप लोग यहाँ पे बेसिकली एज एनवायरमेंट वेरिएबल यूज करोगे. मैंने कहा था कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट है प्राइवेट की, विदाउट प्राइवेट की नो वन कैन इनिशिएट ट्रांजैक्शन. सो मेक श्योर कि ये लोग आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो. एंड that's it, like we are done with the smart contract deployment. This buy me a coffee smart, basically our first smart contract project or blockchain project. I can check it on here in this core explorer. मैं ये एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ. You can see we created this
कॉन्ट्रैक्ट अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, बट राइट, कॉपी पेस्ट सर्च. Okay, we are on the same page because there is one more thing, like we need to verify everything by this command. I can show you, but हमारा steps यहीं तक रहेगा. So just make sure कि आप लोग इसको understand करो, right? So I can verify the smart contract as well. ये step नहीं रहेगा आप लोगों के इसमें, but मैं फिर भी बता रहा हूँ. अगर कोई interested है करने में तो definitely you can try. अभी लाइक यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है. यू कैन सी मैंने ये एड्रेस कॉपी कर रखा है. ओके, सो यू कैन ट्राई हियर. सी कॉन्ट्रैक्ट नाउ. अभी मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर दिया. जब ये वेरीफाइड नहीं होता है तब ये बेसिकली ग्रीन डॉट नहीं आता है. बेसिकली ये कोड नहीं विजिबल होता है. जो कोड मेरा वहां पर VS कोड में है, सेम कोड आई कैन फाउंड हियर, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बाय मी कॉफी, struct coffee address, same code I have in my VS code as well. You can see buy me coffee, new coffee, struct, same things you can find here. So these are the basic like workflow how we can go through in our IRL session. हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे और ये वर्कफ्लो हम बेसिकली फॉलो करने वाले हैं. तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग जो भी लैपटॉप के साथ में हो यार, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग एक बार ट्राई कर लो, ड्राई रन कर लो, ताकि आप लोगों के लिए ब्रशअप हो जाएगा और बेसिकली आप बाकी लोगों से आगे रहोगे. सो यू गैस कैन हेल्प देम जिनको नहीं पता है या फिर जो लैब के सिस्टम को यूज करने वाले हैं. सो आप लोग उनको एटलीस्ट हेल्प कर पाओगे और कंट्रीब्यूट कर पाओगे. सो नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर हियर, व्हाई वी आर टेकिंग सो मच टाइम टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स. वी नीड टू ऑनबोर्ड यू गाइस, ताकि आप लोग यार जब भी अपॉर्चुनिटीज के लिए देखो ना, कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो आप लोग ये बेसिक थिंग्स से अवेयर रहो. एटलीस्ट जिन्हें गिटहब नहीं पता है वो लोग गिटहब स्टार्ट कर देंगे. जिन्होंने ब्लॉकचेन नहीं सुना है एटलीस्ट उन्होंने ब्लॉकचेन सुन लिया होगा. जिन्होंने मेटामास्क नहीं सुना है उनको एटलीस्ट मेटामास्क का पता चल जाएगा. और आज तक जो सिर्फ सेंट्रलाइज सिस्टम में ही अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, दे नीड टू इम्प्रूव, अपग्रेड देयर सेल्फ. क्योंकि यार जब ये चीजें नेचुरली मार्केट में होंगी ना, लाइक जब ये मेटामास्क की चीजें सब नेचुरली समझ रहे होंगे ना, दैट टाइम यू गाइस बी एन एक्सपर्ट. लाइक जैसे हम अभी कर रहे हैं, to be honest, I'm considering myself when everything is in like जब ये सब ग्राउंड लेवल पे जब नेचुरली सब लोग जान रहे होंगे ना ब्लॉकचेन क्या है, वेब3 क्या है, वी आर द एक्सपर्ट. हम एक अलग डिफरेंट जोन में होंगे भाई. इतना इजी एक्सेस नहीं होगा.